I am going to talk about average. Today in this lecture, we are going to study about average, which is considered one of the top most scoring area in quantitative aptitude and numerical ability. Every year, all the central and state government exams with uh, the syllabus of inclusion of maths and quantitative aptitudes, loads of questions from average are given, and in this regard we are starting our lecture. आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज के ऊपर पढ़ेंगे, तो समय बर्बाद न करते हुए हम लोग आगे बढ़ें. Now, what is average? At first, we need to have basic understanding of average. What is average? Without having the basic knowledge, we cannot move on. We cannot because without having the basic knowledge, if we go directly solving difficult questions, then probably it may not be possible to comprehend fully, and this will retard the overall preparation process. Hence, I am going to start. An average or an arithmetic mean is the sum of n different data divided by n. Then obviously you have understood. Now there are certain datas and you have to add all of them, and thereafter you have to divide by number of data. What are the basic formulas? एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो एवरेज को हम लोग निकालते कैसे हैं? जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों का एवरेज निकल आता है. तो इन दिस रेस्पेक्ट द नेक्स्ट formula, relevant formula is total of data divided by number of data. Using this formula as well, we can find out first and second formula are the same, only the words are different. And the third important formula is total equal to average into number of data. When average is multiplied by the numbers, then we get the total. Now, without wasting time, it is better to move on with solving the sums. Now, in this regard, at first we have to look at some examples. Suppose a man covers a certain distance at x km per hour and in equal distance at y km per hour, then the average speed during the whole journey is. Suppose there is a man, he covers a certain distance and the distance covered, the speed at which distance is covered is x km per hour, and he covers the equal distance at y km per hour, then the average speed during the whole journey will be. To solve this kind of questions with this requirement, we have to use this formula, twice xy by x plus y kilometer per hour. And अब इस तरह के सवालों को पहले समझना हम लोगों को पड़ेगा. अगर ये एग्जैक्ट इस हिसाब का है, इस थ्योरम के ऊपर बेस करता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला को लगा के सोल्व कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. Suppose there is a man and he scores 35, 45 and 37 runs in first, second and third innings respectively. Now, in all these three innings, his average runs will be what? In first inning 35, second inning 45 and third inning 37 divided by 3. Average will be 39 runs. In 3 innings, the batsman will score 39 runs in 3 innings. Without wasting time, it is better to move on with the questions. Now, taking on the first question, find the average of all prime numbers between 30 and 50. तो क्वेश्चन बोला गया है कि 30 और 50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना होगा. तो 30 और 50 के प्राइम नंबर्स, एट फर्स्ट वी नीड टू नो, we need to have the knowledge of prime numbers. What kind of numbers are called prime numbers? Prime numbers are those numbers which cannot be divided by any other number except one in itself. In this regard, I would like to say that 1 is not a prime number, 2 is a prime number,
3 prime number, 5 prime number, 7 prime number, 11 prime number, 13 prime number, 17 prime number, 19 prime number. Thereby we have infinite numbers of prime numbers. Now we need to find the average of prime numbers between 30 and 50. We have to determine the numbers at first place. 31, 37, 41, 43 and 47. All these fives will be between 30 and 50. Now we have to find out the average. We need to add all of these numbers, 31, 37, 41, 43 and 47. All of these numbers should be added, and thereon we have to divide them by 5, and summing them up we will get 199, and 199 is divided by 5, we will get 39.8. नाउ क्वेश्चन को समझ में आ गया. 5 प्राइम नंबर से 30 और अब the averages of 30 boys of years. Now total ages of 30 boys will be, when average is 14 years, then if we want to calculate the total age of 30 boys, 14 into 30, when 14 and 30 are multiplied, we will get 420 years. Okay, total ages of 30 boys, 420 years. Now there are 30 boys, and thereupon there is a class teacher, and his age is also to be included. Now if we add the age of teacher, then the average will be 15. Now there are 31 persons including the teacher. Multiplying them, we will get 465 years. Age of class teacher, how to find out the age of class teacher? Thereupon 465 minus 420, we will get 45 years. Age of class teacher is calculated thereby. तो अब क्वेश्चन को हिंदी में अभी हम लोग देखते हैं कि द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स. क्लास में 30 लड़के हैं जिनका एवरेज 14 ईयर्स दिया हुआ है. उसमें क्लास टीचर का अगर एज इंक्लूड किया जाए तो एवरेज 15 हो जाएगा. तो क्लास टीचर का एज निकालना है. तो टोटल 30 बॉयज़ का एवरेज तो हम लोग इस हिसाब से निकालेंगे. टोटल 30 बॉयज़ का टोटल एज निकालेंगे तो 420 ईयर्स आ जाएगा. अब उसके बाद में हम लोग अब जब क्लास टीचर का एज को इंक्लूड करते हैं तो 15 एवरेज आ जा रहा है, तो 31 से इंटू करेंगे तो 465 आएगा. तो एज ऑफ क्लास टीचर कितना होगा? 465 माइनस 420 हो जाएगा, 45 आ जाएगा. नाउ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं. तो ये कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला होगा? एज ऑफ न्यू एंट्रेंट इक्वल टू न्यू एवरेज प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स इनटू इंक्रीज इन एवरेज. तो अब हम लोग को नया एंट्रेंट, जो नया एंट्रेंट कौन है? हु इज़ द न्यू एंट्रेंट? न्यू एंट्रेंट इज द क्लास टीचर. द न्यू एवरेज विल बी 15 ईयर्स. इट इज़ गिवन. ये दिया हुआ है. नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स, पहले के कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं. एवरेज में कितना बढ़ रहा है? नया में 15 एवरेज है, पुराना में 14 एवरेज था. तो माइनस करके 30 से इंटू कर दिया तो 45 ईयर्स ऑफ ओवरऑल एवरेज आ गया. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. फाइंड द एवरेज.
का जो एवरेज वेट है वो 3 kg इंक्रीज किया गया जब एक आदमी जिसका वजन 120 kg है उसको रिप्लेस किया नया आदमी से, तो नया आदमी का वेट कितना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करके। इफ द एवरेज इज इंक्रीज बाय 3 kg देन द सम ऑफ वेट्स इंक्रीज बाय 3 into 4 इक्वल टू 12 kg। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एवरेज कितना इंक्रीज होगा, 3 kg एवरेज इंक्रीज होगा। एवरेज कितना इंक्रीज होगा, 3 kg एवरेज इंक्रीज होगा। तो सम ऑफ वेट्स कितना इंक्रीज होगा, 3 kg एवरेज इंक्रीज हुआ, तो 4 जन है तो 3 into 4 12 kg ओवरऑल सम ऑफ वेट्स इंक्रीज हुआ। और ये वेट्स जो इंक्रीज हुआ वो किस लिए हुआ, क्योंकि नया आदमी को जो इंक्लूड किया गया उसके वजह से हुआ। तो ऑब्वियसली जो नया आदमी है उसका एज जो है वो पुरानों से ज़्यादा होगा, तभी ना एवरेज इंक्रीज हुआ। 120 + 12 इक्वल टू 132 आ जाएगा नया आदमी का। Now to solve this question we can use this formula as well. Weight of new person equal to weight of removed person plus number of person into increase in average. Weight of removed person 120, number of person 4, increase in average 3. 120 plus 4 into 3 132 kg. Now without wasting time it is better to move on with the last question in this lecture series, in this lecture part. This question is very simple, but solving it you need to have basic understanding of basics, means formulas are needed. Now find the average of first 20 multiples of 17. Now what are multiples? There are two concepts, multiples and factors. What are multiples? When we listen the term multiple, then it comes to our mind that some sort of multiplication is involved here. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, thereby multiples are derived. Now so far factors are concerned, factors are parts, means when a particular, suppose 8, the factors of 8 are 2 4 1, all these are factors of 8. When our number is divided by its factor, a complete number is obtained, a whole number is obtained. Now to find out the required average of in this question, in the context of this question, 7, we need to find out 20 multiples of 7, average of. So 7 into, from 1 to 20 we have to add all the numbers, divided by 20. We will get 7 into 20 into 21, 20 into 2, 147 by 2, 73.5. तो इस समय क्वेश्चन समझते हैं 20 मल्टीपल्स का हम लोगों को एज एवरेज निकालने बोल रहा है, तो रिक्वायर्ड एवरेज कितना होगा इस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखें एवरेज के ऊपर, पार्ट 2 जो जल्द ही आने वाला है। Now we are concluding the lecture.